Hi! Culture breathes through the rhythms of cinema and dance, where stories come alive and traditions find their voice. Over the course of 9 days, I'm sure there'll be plenty of stories as the nation celebrates Navratri. Young or old, bring out the dandiya and let yourself loose. Happy Navratri to all of you. I'm Atika Farooqi, and here are the highlights of Now Showing. Ananya Pandey and director Vikramaditya Motwani's cyber thriller Control stands out for its unique plot. Anupam Kher and Mahima Chaudhary talk about their poignant drama, The Signature. Danish Hussain, through his play Main Pal Do Pal Ka Shair, who emphasizes why Sahir Ludhianvi remains the most flamboyant lyric writer of all time. And music composer Salim Merchant talks about Coldplay Mumbai concert ticket fiasco and creating music for Saif and Kareena starrer Qurban. Let's begin with Vikramaditya Motwani's Control, that is released on Netflix this week. Well, Control delves into the intricate relationship between technology and human emotions, presenting a narrative that is both timely and thought-provoking. Headlined by Ananya Pandey, the film attempts to explore the dark side of social media and artificial intelligence, AI, through a cyber thriller lens. Control follows Nella Avasthi, played by Ananya Pandey, and Joe Mascarenhas, played by Vihan Samat, a young couple whose adorable romance quickly garners them a substantial online following. As influencers, they document their lives on their YouTube channel, Enjoy, blurring the lines between genuine affection and performative relationship for social media engagement. Hi, Ghar Ghar Ki Kahani. Their seemingly perfect relationship takes a dramatic turn when Nell accidentally live streams Joe cheating on her, leading to a highly publicized public breakup. In her quest to erase Joe from her digital existence, Nella turns to an AI app named Control, which promises to remove all traces of Joe from her online life. However, the AI soon begins to overstep its boundaries, controlling various aspects of her life and leading her into a web of manipulation and danger. The film navigates through Nella's struggle to reclaim her autonomy in a world increasingly dominated by technology. Ananya Pandey delivers a standout performance as Nella, capturing the emotional turmoil, vulnerability of a woman grappling with both personal and digital upheaval. Her portrayal is nuanced, making the character's descent into obsession believable and relatable. Vihan Samat as Joe provides a solid counterbalance, effectively embodying the superficial charm of an influencer whose actions have real consequences. Apar Shakti Khurana's cameo as the AI assistant, Alan, adds an unsettling layer to the narrative, though his role remains limited. The chemistry between Pandey and Samat, previously seen in Call Me Bae already, adds depth to their on-screen relationship, enhancing the film's emotional stakes. Motwani, along with screenwriters Avinash Sampath and Sumukhi Suresh, adopt the screen life format, presenting the story through the screens of laptops and smartphones. This approach offers an immersive experience, reflecting the protagonist's digital immersion. The technical execution is commendable, with slick cinematography by Pratik Shah and crisp editing by Jahan Noble, which maintain the film's pacing. However, Control struggles to sustain tension throughout its runtime. The first half, despite a strong premise, becomes bogged down by repetitive sequences of Nella interacting with the AI, making the narrative feel sluggish. The build-up to the climax lacks consistency, resulting in a delayed sense of urgency that only surfaces towards the end. While the climax is gripping, it feels like a last-minute effort to inject excitement into an otherwise tepid storyline. At its core, Control is a cautionary tale about the pervasive influence of technology and social media on personal relationships and individual autonomy. It questions the extent to which we allow AI and digital platforms to mediate our lives, highlighting issues of privacy, invasion, and the commodification of personal experiences. The film effectively mirrors real-world anxieties about data privacy and the superficial nature of online interactions. Despite its relevant themes, Control does not delve deeply enough to leave a lasting impact. The exploration of AI's role in personal relationships feels sometimes surface level, and the film misses opportunities to provide a more profound commentary on the subject, which it could have probably. Control, though, offers an intriguing premise with strong performances, particularly from Ananya Pandey. The film's technical prowess and timely themes make it a worthwhile watch for those interested in tech
driven narratives. However, its inconsistent pacing and lack of sustained tension prevent it from fully realizing its potential. Control serves as a decent addition to the cyber thriller genre, but falls short of being a memorable standout. I recommend you do give it a chance at least. And now moving on. He started his career playing a 65-year-old character in Saranj at just 28. 40 years later, we see Anupam Kher in a similar sullen role in The Signature, a poignant film of an old man struggling to save his ill wife. The story resonated deeply with Kher as he stood by his cancer survivor wife, Kiran Kher, like a rock. But not everyone has the resources to afford good medical care. This film also felt personal to Mahima Chaudhary, a cancer survivor herself. In a special chat with me, they talk about their poignant film and, in a rare instance, playing good friends on screen. Watch this beautiful film, A Signature. I have to congratulate all of you, Anupam ji, Mahima and Gajendra, the director of the movie. In a highly populous country like ours, actually many populous countries like ours, क्या करें, पैसा महंगा है, जान सस्ती है. And if you've not watched the trailer or the film, you must watch it. एक आदमी की मुहिम अपनी मरती हुई बीवी को बचाने के लिए, मेडिकल सिस्टम एक अलग तरीके से काम करता है, सब कुछ एक अलग तरीके से काम करता है. द सोशल सिस्टम, बच्चों और माँ बाप के बीच की रिलेशनशिप्स, व्हाट अ ब्यूटिफुल इंट्रिकेट स्टोरी लाइन. This is not fictional. This is a real life story, isn't it, Anupam ji? हम और खासकर पेंडेमिक के बाद तो हम सब ने बहुत महसूस किया कि मैं हमेशा सोचता हूँ इस फिल्म को देख के या इस फिल्म के बारे में बात करके कि अगर आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके बहुत करीबी को आपको जो वेंटिलेटर में हैं उसके पेपर पर आपको साइन करना है कि क्या हमको वेंटिलेटर हटा देना चाहिए, तो आप क्या करोगे. और ये सिचुएशन हैमलेट से भी ज़्यादा खतरनाक है. To be or not to be. When Gajendra came and narrated the script, and I was taken aback because we had all gone through this whole problem. My mother was in the hospital during pandemic. Kiran was diagnosed with cancer. So many things had happened. So everything was real. और फिर उसके बाद बेटे का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहता है कि बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, वो गलत नहीं है. क्या करें? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म कि वो गलत नहीं है. इसमें कोई भी गलत नहीं है. हॉस्पिटल वाले भी अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं, मगर ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी है. महिमा, आप कई फिल्म्स में अनुपम जी की इसमें आप फ्रेंड हैं. मुझे ऐसा अब इन्होंने 525 Hope and a Little Sugar, but that was a completely different. She played my daughter-in-law. So आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? And tell us about some interesting incidents. Do you remember the first time we met? Shukriya, you were not in Shukriya, na? No, we met long time back. Events वगैरह में मिलते रहते थे. नहीं, but Hope and a Little Sugar. Hope and Little Sugar must have been Omje Jagdish was before that. So Tabu was supposed to do the film, and 2 days before the film, she suddenly didn't turn up. So I requested her, and then she was. So I'm always I've been the grateful. Stepney in a lot of people's lives. It's not a Satish Stepney. Kaushik. You are an Angel. alternate to a very fine actress. Very Tabu fine is a very actor. fine actress. Very fine. So it's not that at all. I think what you've done in this film, all your complaints about such situations will go away completely, because only you could have done that role. Only you could have played this character in the world. I'm saying it. And Wow, thank you. Yeah, Compliment. yeah, it's beautiful what So she's an done. angel. An angel steps in at the last And moment in her to own save you. life, what is going on in the film is amazing. Yeah, वो डिसीजन इन्होंने रात को लिया था, जो हम आपने तो फिल्म देखी है. मैंने देखी है, but we don't वो want पर्टिकुलर मोमेंट जो जिसमें उसको अरविंद सांसें लेता है, वो डिसीजन हमने रात को लिया था कि अगर ऐसा कर सकें. एंड शी वाज ब्रेव एनफ टू डू दैट एज एन एक्ट्रेस. आपने 525 मूवीज फिनिश ये 525वीं है. अब मैं 17 फिल्में ज़्यादा कर चुका हूँ. 542. थैंक यू. नजर ना लगे. अच्छा अनुपम जी, हम एक्टर्स के साथ शूट करते हैं तो उनके मैनेजर्स की तरफ से हेयर और मेकअप की फी आती है. आपकी हेयर और मेकअप की फी क्या है? ये दुखती रख पे बाल रख रही हैं. वो भी ऐसे डायरेक्टर के साथ जो 2-2 मिनट बाद ऐसे करता जा रहा है. हीरोइन से ज्यादा ऐसे कर रहा है. हम दोनों के सामने
दोनों के सामने। इन्होंने विग पहनी है, मेरे बाल नहीं है। सो नो हेयर, आर्टिफिशियल हेयर एंड हेयर ही हेयर। वाह, Okay. So I wanted to ask you, in the first film of an actor and the 525th film of an actor, as a person, as an actor, or as an actor, 5 बुनियादी फर्क बताइए, क्या growth होती है? If you're a student, then there is lot of growth. I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. And I was lucky to have a film like Saransh, where I was 27 years old and 28 years old when I was shooting, and I played a 65-year-old man. I think over here I'm playing a 65-year-old and I'm still not feeling like a 65-year-old. I think when you're learning, there is always a possibility. And I think, to me, journey is much more important than destination. आपने श्रीमती से लेके लंबे careers आप लोगों के रहे हैं. And I thought, my gosh, I'm shooting with the stalwarts today. If you had an opinion on how much content is being made as opposed to how much is being watched, gap कहाँ है? जब हम वॉच कर रहे थे, वी बिलोंग टू अ जनरेशन जैसे फ्रेंड्स या रामायण या महाभारत, एक टाइम था स्पेसिफिक जहाँ ट्रेन भी रुक जाती थी. सारे काम, ऑफिसेज, आई थिंक हॉस्पिटल्स में भी एक टाइम होता होगा. पीपल यूज्ड टू जस्ट वॉच दैट बिकॉज देयर वाज दिस immense connect. Now you have your own time to watch, still there is no connect. Okay. So I am trying to find out also what is it that people are unable to connect. Either they don't have a backstory, जैसे महाभारत की एक बैक स्टोरी थी, या फिर फ्रेंड्स जो इतना पॉपुलर हुआ यूनिवर्सली, दे हैड अ कनेक्ट विद ईच कैरेक्टर. उनको वो कैरेक्टर अच्छा लगता था कि ये लव अफेयर में सक्सेसफुल है ही नहीं, right. और या इनके बच्चे नहीं हो पा रहे, right. या this something. Yes. अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें बन रही है ना, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ. और जिनको मिल रहा है वो देखी जा रही है, वेस्ट नहीं हो रहा है. जो चमक रहा है वो दिख रहा है. जो अच्छा कंटेंट आ रहा है, अच्छा काम, जिसको अच्छा काम बोले, अच्छे फिल्में बोले, वो अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, पानी से ऊपर आ गई तो लोग उसको देख रहे हैं. बट नीचे बहुत फिल्में मुझे मालूम है, मराठी में भी, हाँ अच्छा है, अच्छी चीजें, अच्छी कहानियाँ जो बनी है, जो बन रही है, मगर वो दिख नहीं रही है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. अब एक अच्छी फिल्म आ रही है तो इसके साथ मेरी 10 फिल्में वो है जो मुझे मालूम है जो नहीं आ रही है, तो वो बहुत बड़ा नहीं, मुझे लगता है कि ये हर दौर से मैं गुजर चुका हूँ. 4 दशक तो मुझे हो चुके हैं. हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि वीडियो आ गया अब बर्बाद हो जाएंगे, फिर डिजिटल आ गया अब बर्बाद हो जाएंगे, अब सिनेमा हॉल टूट रहे हैं अब बर्बाद हो जाएंगे. ऐसा बर्बाद नहीं होता है. जिसको पनपना होता है वो पनपता रहता है. एंड वी हैव चॉइसेस. पहले जुहू से लेकर वर्सोवा तक 2 चाइनीज़ रेस्टोरेंट थे, आज 40 हैं. तो कुछ तो हो रहा होगा जो सर्वाइव कर रहे हैं. एंड अटेंशन स्पैन कम है ना लोगों का. मुझे एक ज़माने में 200 नंबर याद थे, अब मुझे 4 नंबर याद हैं क्योंकि सब मोबाइल इस पर हैं. सही बात है. And now come back to the world of plays and poetry while still being connected to cinema. An unheralded name in Hindi cinema is Danish Hussain, a well-respected figure in the theatre circuit. On the big screen, he's perhaps best known for playing a supporting father who encourages his daughter's dream of pursuing Bharatnatyam in Baba Azmi's acclaimed film, Meer Aqsam. This year, Hussain has been making waves with Main Pal Do Pal Ka Shayar Hoon, a play about the life of the great poet and lyricist Sahir Ludhianvi. I watched this play in Prithvi Theatre in Mumbai and I was completely bowled over. What is it like to step into the shoes of such a prominent figure as an actor and as a director of the play? Actor and director Danish Hussain shares his experience and reflects on the life of this legendary artist and why Sahir is still one of the most prominent and the most relevant poets and lyric writers of our time. मैं पल दो पल का शायर हूँ. वाह. सबसे अच्छी बात तो यही है कि लोग कहते हैं कि हमें लगा साहिर जिंदा होगा स्टेज के ऊपर. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि अगर कोई कहे कि साहिर जिंदा हो गए. ये एक कांस्टेंट मुसलसल एक प्रोसेस है जिसमें आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम सिनेमा. पहले तो जब मैंने मीर अली हुसैन की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें साहिर बैठे अकेले बात कर रहे हैं, तो आई थॉट कि क्योंकि साहिर इतने एनिग्मेटिक और इतने कॉम्प्लेक्स पर्सन थे, तो उनके ज़माने में जो उनके पेयर्स थे, उनके साथ के लोग थे, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं. मुझे लगा कि ये नज़रिया
नाटक में लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको लाया कैसे जाए। प्लस गाने भी हैं और आई वांटेड सॉन्ग्स टू हैपन लाइव, तो देन आई थॉट दैट मे बी आई कैन डिवाइड द स्टेज इन 3 sections. One section is the study, second section can be turned into a music studio, जो 1970s 80s में एक म्यूज़िक स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, और वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट, कलाकार, म्यूजिशियन, सिंगर्स, एक रिसर्चर साथ में बैठी है, मंडली बैठी है, और वो लोग साहिर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी वो साहिर के गाने जैम करते हैं, कभी कभी इट टर्न्स इनटू अ फॉर्मल रिकॉर्डिंग जहाँ पे साहिर का कोई गाना एज इफ की फिल्म के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाय यूजिंग दैट डिवाइस आई वाज एबल टू ब्रिंग इन दोज एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी वेयर साहिर इज नॉट स्पीकिंग, वेयर समबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट साहिर। एक मुश्किल ख़याल को आसान अल्फाज में बांध के गीत की तरह या शायरी की तरह पेश कर देना, वो उनका हुनर था। वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो आम आदमी समझ सके। तो जिससे क्या होता था कि आज भी जब हम ये नाटक करते हैं, वो गाने जब स्टेज पे परफॉर्म होने शुरू होते हैं तो ऑडियंस हमारे साथ गाना शुरू कर देती है। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, या जो प्यासा के गाने हैं, या हम दोनों के गाने हैं, कभी कभी के गाने हैं, त्रिशूल के गाने हैं, ये गाने आज भी लोग गा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या रोमांस हो सकता है कि जो उनके रोमांटिक गाने वो लोगों की ज़बान पे चढ़े हुए हैं। सबसे कामयाब जोड़ी तो SD बर्मन साहब और साहिर लुधियानवी साहब की है। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी, बाजी उसमें से एक फ़िल्म थी, और जो सबसे आइकॉनिक फ़िल्म है वो प्यासा है। ये साहिर बताते हैं कि राज खोसला साहब एक बार गए गुरुदत्त साहब के पास, और उन्होंने बातों बातों में इनके जो तलखियाँ, जो इनका मजमुआ था, उसमें से चकले नज़्म सुनाई, और गुरुदत्त कहते हैं कि चकले सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब चकले में एक नज़्म थी साहिर लुधियानवी की, जिसका एक मिसरा था कि सना खान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है, मीन्स दोज हु वैक्स एलोक्वेंस अबाउट द सीक्रेटनेस ऑफ ईस्ट, वेयर आर दे। तो उसी ज़माने में शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने किसी तकरीर में बार बार ये जुमला दोहराया था कि मुझे हिंद पर नाज है। तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि साहिर कुछ भी करके ये जुमला जो है, ये फ़िक्रा तुम गाने में ले आओ। तो उन्होंने सना खान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है उसको हटा दिया, और जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, ये मिसरा वहाँ पर डाल दिया। अब आप यही समझ लीजिए कि जब 21 साला यश चोपड़ा पहली बार बम्बई आए तो बड़े भाई BR चोपड़ा ने पूछा कि भाई किसी हीरो से मिलना है तो बताओ। तो यश चोपड़ा ने कहा कि भाई जी साहिर से मिलवा दीजिए। तो इस तरह का जो है फैंडम था साहिर का कि यश चोपड़ा जब पहली बार आए तो वो किसी हीरो से नहीं मिलना चाहते थे, साहिर से मिलना चाहते थे, और ये दोस्ती उनकी बरकरार रही। और जब ये त्रिशूल फिल्म में गापू जी गम गम गाना जो बहुत मशहूर हुआ, तो ये गापू जी गम गम जो शुरू के अल्फाज हैं, ये साहिर ने नहीं लिखे हैं, बाकी गाना साहिर ने लिखा है। इसको यश चोपड़ा जी ने ऐड किया था, विच इज़ काइंड ऑफ अ जिब्रिश, इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। तो अब मसला क्या था कि बग़ैर साहिर की इजाज़त के ये गाने में आ नहीं सकता था। तो ख़य्याम की ड्यूटी लगाई गई कि तुम जाके उनको मनाओ कि ये आजकल के यूथ के हिसाब से बहुत अच्छा है और गाने में इसका रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है साहिर ने जब पहले सुना तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में यश जी गए, उन्होंने साहिर को कन्विंस किया, एंड दिस रिफ्रेन काइंड ऑफ केम इन द सॉन्ग एंड बिकेम सो फेमस। आप उससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दौर में अगर कोई लिरिसिस्ट कुछ लिखता है और कोई बहुत स्टार डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो बोलता है, तो ये डिबेट ही नहीं होती है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लिरिसिस्ट बदल देगा गाने को। लेकिन साहिर का मकाम इतना ज़बरदस्त था कि पहले यश चोपड़ा जी को ख़य्याम को भेजना पड़ा, जो ख़ुद एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उसके बाद यश चोपड़ा जी ख़ुद गए साहिर के पास उनको कन्विंस करने के लिए। सो दैट काइंड ऑफ शोज़ द स्टैच्योर ही हैड एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ लिरिसिस्ट। Time for us to take a breather, but we'll be right back soon with the merchant of music on the other side. Yes, the Salim merchant from the duo Salim and Sulaiman, who famously composed that song, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. I love that song. So stay tuned after the break, where he, by the way, talks about the whole Coldplay fiasco and more. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui. British rock band
Coldplay is all set to perform in Mumbai, India in January next year, 2025. A controversy erupted when fans attempting to purchase tickets encountered obstacles on September 22nd, leaving some of them completely disappointed. To talk about that and more, we have music composer Salim Merchant in conversation with my colleague Vishal Chatkara, where he talks about his films, career, and so much more about music. Salim, on 22nd September, the tickets of the upcoming Coldplay concert went on sale. Millions of people competed to buy the tickets on Book My Show, which was sold out in few minutes, resulting in tickets are being sold for obscene amount on the reselling platform. What would you like to say about this allegation of foul play regarding the sale of tickets? It's like a dream come true for Coldplay to come to India. It's a big deal. It's not easy. Coming to the people buying tickets, it was first of all just 4 tickets each person. I can't believe people bought tickets and now reselling it on some resale sites. It's like, I can't believe this. I really get angry and upset because there are so many real fans who want to go and watch the show. They are just not going to be able to ever, because their tickets are at ridiculous prices now. I mean, they're selling it for 10 times the price. So kaun kharidega? Who's going to buy it? It's really sad. The main reason why this fiasco has happened is because there are some people who've very smartly planned that let's buy these tickets and resell it. I think those guys should not be able to operate in India, at least. Just like I got scammed. I got scammed at the Taylor Swift show. I bought £2,000 ticket. It was those seats which I bought. Each ticket was £2,000. But the seat that I got was not even £60. मेरे experience से मैं कह रहा हूँ, people should not buy these resale tickets, because they are not going to be correct. It'll be 15 years to Kurban, that was released on November 20th, 2009. What is your fondest memory of making music for Kurban? It was a tough film. It wasn't easy. Karan wanted us to do the music for this movie without having any kind of commercial pressure. I remember when I had made the song Shukran Allah, it was Nazron se nazre mili to Jannat si mehki fizaएं लब ने जो लब छू लिया तो. It was a beautiful love song. But because the script was said that, this song happens right after Saif leaves the mosque. He does the sajda and he says, "Thank you, Allah." And then the song starts. Because I'm also a background score person, I thought, why don't I start the song with like a chant, like a prayer. And because he says, "Thank you, Allah," I started with, Shukran Allah walhamdulillah. Shukran Allah wala. When I started the song like that, I felt very peaceful. I felt very connected with the Almighty, and I felt like this is something special. You and your brother were also working on the animated version of Kuch Kuch Hota Hai that was called Kuchi Kuchi Hota Hai. Yeah, that's right. The Which film never was released. shelved. Which never released, unfortunately. I think Karan decided to keep it in wraps because he wasn't very happy with how things were going. I think with the animation, we had made the songs. Some of them were sort of inspired with the original songs of Kuch Kuch Hota Hai. Some of them are brand new songs. In fact, I still have them. They had more English. Some parts had more English. It was a nice combination of English and Hindi. It had a lot of childlike quality because it was animation. It was very pop. It had a lot of like new age pop kind of a vibe at that time. Now, of course, it may sound a little dated because it's been 15 years now. But on that note, I want to thank you for talking to me. Thank you. Jate Jate, would you like to give us few lines of your song that's
that celebrate the spirit of Navratri season. Okay, so this song Chururi. Udi re chunneri, udi re chunneri, sarak 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 jaye re chunneri. Udi re chunneri, udi re chunneri, sarak 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 jaye re chunneri. To play a wrong note is insignificant, but to play without passion is inexcusable, said the legendary Beethoven. I agree. Salim Merchant's music has passion written all over it for the past so many years. Well, on this note, I'm Atika Farooqui saying goodbye to you with a promise that we meet each other next week. Till then, you enjoy the Garba, the Navratris, and have fun.